Hi everyone, hope you guys are doing good. Let's continue with the second video in the geography series. So in the earlier video I have talked about the concepts of the latitude, the longitude, the earth's shape and the grid system. So in this particular video I would be continuing with that. So those of you in case who have not checked the earlier video, I really would say if you like this session, if you feel that my way of teaching is comfortable for you as well, please do check the earlier video because every topic is interlinked with each other. So you will not be able to make sense of something new if you do not know the earlier one. Secondly, if you are just new to the channel, if you feel the content is worth checking out, do subscribe to the channel and please do like, comment, share as well. Let's continue without wasting any further time. So here are the topics that I would be covering in this particular session includes the concept of local time, standard time and the concept of international date line. The first one, as you can see here, is related with the concept of local time. Now see, for this you have got one word written here. What is that one word? That one word is rotation. The two topics of rotation and revolution is something that I would be taking up in another session which would be titled as motions of the earth. But for the time being, because I need to explain you this concept here, for the time being just let me try to demonstrate you. And if you see this here, so this is a globe and you are seeing this, it is the best possible model, it is the best possible thing that can represent the earth, right? Now in this, if you see that the earth, see, this is the axis. You have to imagine this is the axis. Axis is basically the imaginary line and it is a tilted axis. You can see it is not straight, it is not like this, right? Because then I'm pushing it from here. If I keep it straight here, then this is a tilted one. The earth spins around its axis, okay? This is called spinning. So this process of spinning of the earth at its axis is called as rotation. So basically the earth rotates at its axis. The another movement is revolution, or the motion you say is revolution, in which the earth will just ऐसे करके revolve around. So if you imagine the sun to be here in the center of the solar system, the other planets just revolve around it. So that is revolution, but that we have to do little later. Now in this process of spinning, from here on we are going to focus on this particular topic of local time. So let's see what is being talked about here. So the process of the rotation is basically about the spinning of the earth. So for one spin of the earth, or you call it as rotation, so it firstly happens from west to east. So if somebody asks you that in which direction does the earth rotate, so you have to remember the earth rotates from west to east. Secondly, how much time is it needed? It takes 24 hours for the earth to rotate on its axis. Secondly, because it is a sphere, okay, that we have done in the previous class, that it is all the practical purposes, the shape is considered to be a sphere. So it takes 360 degree, in the 24-hour times it covers 360 degree because it's a sphere. So if going by the basic calculative methods, the basic unitary methods and everything, we see this that 360 degree covered in 24 hours. So 15 degree is covered in 1 hour. 1 hour means 60 minutes. Okay, that's a basic calculation. And then you see that 1 degree is covered in 4 minutes because 1 hour is 60 minutes. So this is the basic unitary method calculation. Now this is what you have to remember for the time being. Okay, 1 hour time being covered as 15 degree, और 15 degree को cover करने के लिए जो time लगता है, that is 1 hour. Okay, so when the earth rotates from west to east, ठीक है, आप समझेंगे, ये हो गया आपका basic, मान लीजिए line for the reference. So you see it is rotating like this, है ना, west to east. This is how it is happening. So now every 15 degree on going eastwards, hear me out very carefully, because the reference line that we have seen in the previous class was prime meridian, that was Greenwich time के हिसाब से, and that is at 0 degree. Now that is the reference point, the reference line that we are using. Secondly, what is important here is that this particular line or this concept of whole time thing is related to the longitude concept. Firstly, also you have to remember and understand this. So every 15 degree में कितना cover हो रहा था अभी हमने देखा 1 hour, है ना, this one, right? So every 15 degree
क्या हो जाएगा, 1 आवर का आपका डिफरेंस आएगा. अब वो 1 आवर बढ़ेगा या घटेगा. So every 15 degree there will be a difference of 1 hour that you have just seen, but it will be increased or decreased. So because the earth rotates from west to east, so every 15 degree when you go eastwards, okay, local time is advanced by 1 hour, because यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इधर वाले में ज़्यादा ही होगा ना, so it will be advanced by 1 hour. So the places east of Greenwich will be ahead of the Greenwich time. If we see the other one, so every time going westwards, now every time when we go towards the west, the local time is retarded by 1 hour, it is decreased by 1 hour. So the places west of Greenwich is behind of the Greenwich time. Now seeing the concept here, because this is what will help you in the further topics also, लोकल टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द शैडो कास्ट बाय द सन. सी बिकॉज हाउ डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कि कौन सा टाइम हमारा रेफरेंस के लिए होना चाहिए, एंड द वर्ल्ड विल जस्ट गो हेवायर इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर टाइम, अ शेड्यूल टाइम विच एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे. यू कैन नॉट हैव डिफरेंट टाइम्स. सो द आइडिया इज दैट द बेस्ट वे टू कीप टाइम इज टू फॉलो सन. सन से अच्छा सोर्स क्या ही हो सकता है टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. So from the shadow cast by the sun, we get to know the local time of that particular place. Because of the planet rotating and of course of revolution, हमें क्या होगा, the position of the planet is changing. तो accordingly sun की rays कहाँ कैसे fall करेगी, that will keep on varying also. We have all of these topics in the further classes, but these are some basic genuine things which you would have to understand to understand this particular concept. So the local time which we can understand from the shadow cast by the sun is shortest at noon. Okay, this is a thing, and it is longest at sunrise and sunset. Now what you have to remember, let us just try and understand this particular diagram. 0 degree prime meridian was the reference line. ठीक है, so west to east जब हम जा रहे हैं, so all the places towards the east one, हमने क्या देखा, it will be ahead 15 डिग्री पर 15 डिग्री 1 आवर का क्या हो जाएगा, अहेड हो जाएगा. बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है. ठीक है, इधर से इधर आ रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट उल्टा जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी बिहाइंड. दिस वॉज द बेसिक थिंग दैट आई जस्ट टॉट यू. नाउ when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have the midday or the noon. Understand this point. What is the reference line that we use for our convenience? This is the prime meridian. ठीक है. Now when and what we have just seen, that the local time is the time when the sun is at the highest point. Up when the prime meridian has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian, now see this, for example, just randomly I'm giving you, let's say this example is prime meridian. ये कोई भी एक लाइन है, इसको आप अभी prime meridian मान लो for the timing, just for the reference. If on this line अगर इस पर sun highest है, ठीक है, sun is at the highest point in the sky in at this particular line, तो इसी पर्टिकुलर मेरिडियन पर ऑल द प्लेसेस विल ऑल्सो हैव नून, मिड डे और नून. नाउ दिस विल बी मोर क्लियर सीइंग दिस ईयर. इफ यू बाइफिकेट और इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, टाइमोलॉजी समझते हैं अगर कि कहाँ से आती है. सो द मेरी एंड द डियन, मेरी इज द टर्म विच सेज सन्स हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई. सो अभी हमने देख लिया सन्स हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, डियन इज डे. So basically meridian is that moment of the day, दिन का वो वक्त when the sun is at the highest point in the sky, और वो नून का टाइम होता है, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट है. आई होप दिस शुड बी क्लियर बाय नाउ. अब आता है ये दो टर्म जो हम टाइम विच वी यूज फॉर टाइम ना, हम बोलते हैं ना AM and PM. So now this is used for time. Now what is happening in this case is that यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है एंटी मेरिडियन टर्म. ठीक है, द टर्म दैट यू कैन सी हियर इज एंटी मेरिडियन, अनदर इज योर पोस्ट मेरिडियन, जो हम सुबह और शाम के लिए यूज़ करते हैं. तो 12 बजे हमारा नून होता है, 12 मिड इज़ द नून. आफ्टर 12 वट एवर टाइम टिल 12 मिड नाइट, तो ये तो सबको पता ही है, द बेसिक थिंग इज हियर कि फ्रॉम 12 नून टू 12 मिड नाइट, वॉट इज़ द टाइम हम जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ PM, दैट इज़ पोस्ट मेरिडियन. विच मीन्स क्योंकि मेरिडियन के हिसाब से ही हम रेफरेंस ले रहे हैं ना, इसीलिए उसको पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं. और इधर फिर 12 मिड नाइट से 12 नून तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, AM यूज़ करते हैं. AM यूज़ करते हैं सुबह का जो टाइम होता है, सो दैट इज़ एंटी मेरिडियन. ठीक है,
तो ये मेरिडियन के इधर वाला टाइम है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट विच विल हेल्प यू सी द टाइमिंग्स एट्सेट्रा थिंग. Now coming here for the concept of standard time. Now you will say कि we already have got the concept of the local time. Then why do we need the reference for the standard time? अब तो हर जगह का अपना अपना local time हो जाएगा ना, because the sun will like be at the highest point. Noon जहाँ पर भी रहेगा वो वहाँ का local time होगा. Because it standard time की अगर हम बात करें, if you just see the basic difference in the definition of the concept of local and the standard time, everything will be clear to us. लोकल टाइम अगर डेफिनेशन पे जाएं, सो इट इज़ द टाइम रेकन्ड बाय द नून सन एट गिवन प्लेस. ठीक है, दोपहर का नून का जो सन है, सो उसका जो टाइम हमको पता चल रहा है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज़ द लोकल टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. कि आपके उस पर्टिकुलर प्लेस में दोपहर कितने बजे हो रही है, एग्जैक्टली 12 जो बजता है जिसको हम मानते हैं दोपहर नून जो होता है वो कितने बजे हो रही है, दैट इज़ द लोकल टाइम. बट the concept of standard time says that it is the local time of the standard meridian of the country. You will have to understand this. See, because the local time of the different places will be different. So because of the difference in the local time of places which are on different meridians. Now अगर हम इंडिया की बात करते हैं, let's see this. ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे just there will be one meridian. We have just seen कि every 1 hour पे जो है हमारा 15 डिग्री जो है वो चेंज हो रहा है. तो एक कंट्री में मल्टीपल मेरिडियंस हो सकते हैं ना. ठीक है, नो तो फिर यहाँ का तो लोकल टाइम कुछ और हो जाएगा, यहाँ नून कुछ और, यहाँ नून कुछ और, यहाँ नून कुछ और. दिस इज़ हाउ इट विल हैपन. द लोकल टाइम विल स्टार्ट डिफरिंग. सो फॉर वन कंट्री देन तो इट विल बी सो chaotic. If you will just move from one city or one state to the another one, you will just see the difference in the local time. This is not how we can go ahead with. So we need to have one standard meridian. ठीक है, एक जिसको हम standard basic मान के चलें. So इंडिया के केस में तो ये है, we will see to it in some time. So there is a need because of the difference. ठीक है, so therefore we need to have the standard meridian also, or and the local time of that standard meridian will be called as the standard time for that particular country. So therefore standard time is needed to avoid confusion, है ना. For example, it is used with respect to preparing the train's timetable because the train will cross multiple longitudes. So आपको जो समय सारिणी दी जाएगी, आपको जो टाइम टेबल दिया जाएगा by the railways, how will you understand? Because it will keep on differing if you just use the local time concept. So for that matter, to have that uniformity, you need to have the standard time concept. Okay. Therefore, it is necessary to adopt the local time of some central meridian. So the best possible way is to find the mid of the country, and also the place, some, let's say some important place, some significant place. That happens in the case of Greenwich because it's an important place. So you find the middle, find an important place, and then assume one line to be the central meridian of the country, and then accordingly derive the time and consider it to be the standard time for that country. So the best possible way would be to understand the thing for India, of course. So for example, in India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. This is what we see here. Now local time at this meridian is taken as the standard time for the country. This is what you need to remember. कि इंडिया में 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो टाइम है दैट वी कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन विच आई हैव जस्ट शोन यू, बिकॉज रफली दिस इज द एक्सटेंट. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. सो रफली मिडिल में इफ़ यू सी, सो दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. 82.5 डिग्री ईस्ट आता है वो. अब this is the local time which at this meridian will be there. So this is taken as the standard time for the whole country, and this is what we call as IST. ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो लेट्स से यू हैव अ फ्रेंड लिविंग अब्रॉड, ओके, एंड द पर्सन, आप विश करते हो ना, यूजुअली पीपल विश एट मिडनाइट. सो देयर इज़ अ कल्चर ऑफ विशिंग ईच अदर एट मिडनाइट ऑन द बर्थडेज. सो व्हाट विल हैपन इफ़ यू कॉल 12 बजे रात को टू विश योर फ्रेंड who is in some other country, तो you might call the person as per your IST, Indian Standard Time. आपके कंट्री में जो 12 बज रहा होगा, let's say you call it that time, but to the other person that might be either after the real birthday there, 12 बजे there, or before that. ठीक है, so that might happen, that will vary, it will happen always actually. So either you choose to wish as per your time or as per 12 बजे of their time, that depends on you. So that is the concept of Indian Standard Time. I hope you can see this here. Moving on, this I just explained you. Acha, it's not always important that one country will just have one standard time. The very simple reason for that is
because some countries have a greater longitudinal extent. कुछ countries बहुत बड़ी हैं, so they have adopted more than one standard time. For example, रशिया की बात कर रहे हैं. Now because I have the globe, I can take this liberty to show this to you. ठीक है, this if you see, you know, this whole yellow portion पूरा, वैसे भी रशिया is so much in news these days, तो क्या ही अब बोलें, this is just an incident we are talking about this. ठीक है, because largest के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखो, दिस होल एक्सटेंट इज ऑफ रशिया. नाउ सो मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर पासिंग हियर, यू नो, एंड दैट्स अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. सो इट एट टाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग ऑफ वन, you know, sort, like one central meridian here. So therefore they have adopted more than one standard time. So रशिया में 11 standard time zones हैं. अच्छा, अब बात होती है टाइम जोन्स की. Now the earth has been divided into 24 time zones. We know because 24 hours is taken to complete one rotation. So what we have for the convenience done is कि 1 hour each का 24 time zones बना दिया, and 1 hour में 15 मिनट का होता था कवर. So that we have already seen each zone will have 15 degree of longitude. Now let's see this map to understand it better. अब ये जो है आप देखिए, एक एक है ना, ये दो ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके पूरे 24 जो हैं वो टाइम जोन्स कवर्ड हैं. ओके, दिस इज़ ग्रीनविच. सो ये वाला जो है वो प्राइम मेरिडियन है. सो वी हैव सीन कि इधर के जो सारे होंगे ईस्ट ऑफ ग्रीन मेरिडियन दे विल बी अहेड, एंड इधर वाले द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन विल बी बिफोर और बिहाइंड, यू कैन से. लोकेटिंग इंडिया हियर बिकॉज ग्रीनविच वुड पास थ्रू हियर, लाइक यू नो, समवेयर हियर, एंड वी हैव इंडिया हियर. So India and Greenwich, the difference here is of 5.5, like 5 hour 30 minutes. ठीक है, 5.5 hours. So India is located east of Greenwich. ये Greenwich है, and India is located east of Greenwich, and India is located, जो हमारा central meridian है, that is 82.5 degree east. अभी जो आपको दिखाया, this one 82.5 degree east longitude. So it is 5 hour 30 minutes ahead of GMT. What is GMT? It is Greenwich Meridian Time. ग्रीनविच से पास करता हुआ मेरिडियन, उसका टाइम. ओके, उसके टाइम को ही बेस मान के, रेफरेंस मान के वी कैलकुलेट इधर ईस्ट और वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रीनविच कहाँ, लंदन से पास हो रहा है. सिर्फ लंदन में अगर 2 बज रहे हैं तो इंडिया में उससे 5.5 घंटा आगे होगा. If there is, like, let's say calculating or saying 2 PM in London, then we will be ahead. India में we will be ahead by 5 or 30 minutes. ठीक है, so India में what is the time that we will have? It will be 7:30 minutes. Accordingly you can just जो है वो try and, you know, calculate. So these are the 24 time zones, and then 5.5 hour का जो difference है, that is in the case. Now comes the major concept of international dateline. Now this you have to hear me out very, very carefully, otherwise that's going to be problematic. International dateline is an imaginary line. This is firstly you have to remember. Now before showing that, reading that out to you and explaining you the concept of that, firstly see here, the line that you see here now, this is called as IDL, International Dateline. There is significance for this line. Firstly, you will see that all the other lines as you are seeing here, they are just, you know, straight, but this is zigzag, zigzag, zigzag. This is not straight, right? So there are variations. Firstly remember this. Then this is Greenwich 0 हम इसको मानते हैं ना, तो ऐसे करते 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 this is how it happens, because अभी तो we are seeing it in the flat surface, we have to see it in the round surface, and we will do this from this. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, international date line है. So this is 180 degree, and I had told you 180 degree is the overlapping line. Eastern side से जाओ आप या western, you go from the eastern side or from the western side, it is one single line. Now what you have to see here, this is an imaginary line, internationally agreed line, that is why it is called as international date line, located at 1 degree meridian, 180 degree meridian, and there are some deviations. You can see here, there are some deviations here, some deviations here, right? These are not the straight lines. Okay, these are the 2 lines firstly that you have to remember before I explain you the concept. Firstly, when the earth moves, let's say if the earth rotates from west to east, that is a different thing, but let's say we are moving from west to east, let's say London से India आ रहे हैं. Okay, so that will be gaining of a day, that will be gaining of a day, and that will happen while crossing the ideal, and east to west जाएंगे तो that will be losing of a day while crossing the ideal. Now let me try to explain you this. Firstly, what you have to remember is that when you cross ideal, when you cross this, let's say, line, तो अब इस line के आप west to east आ रहे हो या इस line के east to west जा रहे हो, is the whole idea.
फर्स्टली दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नहीं तो इट जस्ट बिकम सो कन्फ्यूजिंग। दूसरी चीज़, नाउ इट्स इन द मिडल ऑफ द टाइम जोन। ओके, मिडल क्या है, ये पूरा एक टाइम जोन है, ठीक है, ये पूरा देखिए एक टाइम जोन है, लेकिन ये 0 डिग्री जो हो रहा है वो तो इसके बीच से आ रहा है ना, तो फिर हर के बीच में आपका एक ऐसा लाइन है, ठीक है। तो नाउ ये इस वाले टाइम जोन के बीच में लोकेटेड है, जैसे 0 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पर 1 डिग्री, ऐसे करते 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 पूरा 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। बट हम तो 1 डिग्री में वी आर कंसिडरिंग लाइक 15 आवर का, 1 आवर में 15 डिग्री का टाइम इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग। तो अब 7.5 ये 7.5 ये ऐसे करके डिवाइडेड है, ठीक है। 15 कवरेज होना था ना, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ये 1 आवर है, 1 आवर का वी हैव 24 टाइम जोन्स। ओके, 1 आवर में हाउ मच डिग्री, 15 डिग्री वॉज सपोज टू बी कवर्ड। सो ये जो बीच में हाफ है, विच मीन 7.5 ईयर, 7.5 ईयर, दिस इज हाउ इट इज कवर्ड। सो दिस आइडियल इज लाइंग बिटवीन द मिड, ठीक है, ऑफ वन पर्टिकुलर टाइम जोन। अब टाइम जोन के मिडिल में है, तो इससे क्या हो जाता है, दैट इज वाई देयर इज अ चेंज ऑन द कैलेंडर व्हेन यू क्रॉस दिस लाइन, सो द डेट चेंजेस, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द टाइम और द क्लॉक, ठीक है। अभी आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑल्सो। टाइम क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज द टाइम जोन इज सेम, द टाइम जोन इन दिस ओनली, बट ये बीच में ऐसा है तो डेट चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो देखते हैं, एंड दिस इज इमेजिनरी, सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर लाइक यू हैव टू स्टडी द वे दे हैव गिवन। नाउ इमेजिन दिस टू बी द प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब आप मान लो, ऐसे मान लो कोई भी एक लाइन मैंने आपको बता दिया वो 0 डिग्री है, ठीक है, वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। तो उसका ये अगर ऐसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो उसका जो फिर इधर मैं ऐसे दिखा रही हूँ, लेट्स से दिस हियर इज द 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो इसका जो बिल्कुल इधर से रिवर्स होगा, दिस रिवर्स लाइन, लेट्स इमेजिन की द लाइन विच इज जस्ट नियर दिस एक्सिस, बिकॉज इट इज हेल्पिंग यू सी ना, तो कंसिडर दिस टू बी अ रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो आप एक्सिस का अपना इमेजिन कर लो कि यहाँ पर देर इज वन लाइन विच इज एग्जैक्टली इन ऑपोजिट टू दिस पर्टिकुलर लाइन, so this one will be 0 degree prime meridian and this here will be 180 degree international date line. This is what is represented flat here in the diagram. So you have to imagine it to be a sphere and then consider कि वो कैसे करके जाएगा. Now see what I am trying to tell you. For example, firstly let's say ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है और इधर पीछे 180 है. So if 0 से 180 अगर आपको ये हाफ कंसिडर करना है, 0 से 180 इफ़ यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो यहाँ लिखा हुआ है, सो इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 0 से 180 विच मीन्स यू आर कवरिंग दिस एरिया इन दिस पार्ट, ओके. सो फॉर दिस पर्टिकुलर 180 डिग्री लाइन, अब इधर से व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर देन योर लाइन ऑफ रेफरेंस इज 180 डिग्री ईस्ट. सो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाता है. नाउ इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड लेट्स से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे द टाइम दैट यू हैव इज 1 PM Monday and 1st of January. Let's just imagine, just for the sake of convenience, okay. I am reducing the size to it, yeah. Just consider this to be 1 PM Monday 1st of January. Now when we see this one, this becomes our reference line. So if this is the reference line, which means 180 degree, very sorry, 180 degree here, you know, ये जो आपका एक्सिस पर है 180 degree here will become your reference line. So this is the whole thing and this is the prime meridian. अब वेस्ट टू ईस्ट जाने में क्या हो रहा है, ऐसे करके जा रहे हैं. सो व्हाट इज देयर, देयर इज अ गेन ऑफ अ डे. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेनिंग ऑफ अ डे? Gaining of a day means that you will get to live, you have already lived a one day but you will still get the days again. Why? Because what did we just see, that there is a change on the date in the calendar but there is no change in the time. So you can see the time is same only, 1 PM है 1 AM है, टाइम तो सेम ही रह रहा है ना, मतलब उसी का वेरिएशंस आ रहा है, बट देर इज अ चेंज इन द डे. हाउ डज इट हैपन, वाई इज देयर अ चेंज इन द डे? मंडे से क्या हो रहा है, लेट्स से यहाँ पर 1st of January है, तो व्हेन यू आर क्रॉसिंग दिस, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग लाइक फ्रॉम दिस एंड एज सून एज यू क्रॉस द आइडियल, जैसे आप यहाँ से ऐसे जाते 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 यहाँ पे आइडियल इफ यू आर क्रॉसिंग, व्हाट विल हैपन, यू विल एक्सपीरियंस द डे 2nd of January बिकॉज देयर हैज़ टू बी चेंज इन द डेट. अब टाइम जोन सेम है इसलिए इट्स 1 AM 1 PM 1 AM उसी का पूरा है ना, कवर हो रहा है. 1 AM से 1 AM इज द होल 24 आवर, तो 12 घंटे यहाँ 12 घंटे यहाँ कवर हो रहे हैं, तो टाइम तो सेम ही है लेकिन डेट तो चेंज हो रहा है.
So you will experience 2nd of January. Now what will happen? You have already lived 1st of January here, but as soon as you cross this line, you will experience 2nd January. ठीक है. अब जब आप यहाँ पर 2nd जनवरी में पहुँच जाओगे, विच मीन्स यू हैव ऑलरेडी, देयर इज़ अ गेन ऑफ अ डे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लिव्ड. एंड जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, सी व्हाट यू ऑल्सो हैव टू इमेजिन, ये जो 180 डिग्री का रेफरेंस है, जस्ट कंसिडर दिस एक्सिस टू बी दैट 180 डिग्री फॉर बेटर क्लैरिटी. अब इधर से जब हम इधर गए, तो इधर का जो वेस्ट है, इधर से आप ईस्ट जा रहे हो ना, तो एज सुन एज यू आर क्रॉसिंग दिस आइडियल, यू आर रीचिंग हियर. Imagine this to be on a sheet also now. Imagine this to be a globe, the sheet that you are seeing here. So let's say this is a round body, and as soon as you're moving here, you will come to this point only, because this and this line are actually same. So इधर से मूव करते करते आप जैसे ये क्रॉस करोगे, मतलब आप ऐसे आ जा रहे हो घूम के. ठीक है. तो जैसे ही आप इस लाइन का वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ से जैसे ही आप क्रॉस कर रहे हो, तो आप ऐसे आ रहे हो, तो यहाँ आपको 2nd जनवरी होना था ना, यहाँ फर्स्ट था, यहाँ पर 2nd जनवरी होना था. और वो जैसे ही आपने क्रॉस किया, आप वापस 1st ऑफ जनवरी पर आ गए. यू हैव अगेन कम टू द 1st ऑफ जनवरी, एंड वन है मंडे 1st ऑफ जनवरी. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू ऑलरेडी हैड लिव्ड दैट 2nd ऑफ जनवरी. नाउ अगेन you are coming to this 1st of January. So which means you will get one more day to live a day in January. That is why it is gaining of a day. If we see the concept of losing of a day, what will happen? Now again you have to imagine कि ये sphere है and you are moving like this. ठीक है. Now when we go from east to west, which means we go from this side to this side, which means ये जो 0 डिग्री ऐसे था, अब आप इधर से आ रहे हो, है ना, इधर से आ रहे हो, east to west. So as soon as you cross this line, you will again come here to this line. Now here it was 1st of January, here also 1st of January, 1 PM and 1 AM. अब आप 1st जनवरी पे रह रहे हो, you have to complete this day. But as soon as you cross this line, you reach here and you see आज तो 2nd जनवरी है. No, you have not even got the chance to live 1st of January, which you were supposed to, because you just crossed this day and you got the 2nd January concept. So it is considered to be losing of a day. So gaining of a day when we go from west to east of course ideal, west to east of ideal. Okay, this is what you have to, nahi to the whole concept will go wrong. West to east of ideal, you crossing that, and when you go from east to west, ये भी आइडियल ही है, 180 डिग्री 180 डिग्री इज द ओवरलैपिंग लाइन. तो जैसे ही ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी लूजिंग ऑफ अ डे. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल. Okay, motions of the earth, I think it would be better if I take that in a new session, because that's going to be a lengthier video then. So if we just see here, acha, one more point about the deviations. So why are there deviations? Now you see that this is so confusing na, change in day, date and change in date and no change in time. So this confusion might impact those people, because see, there are islands here and here, there are different islands, Fiji, Tonga, etc. So people are inhabitant there. There are people living on those islands. अब क्या हो रहा है कि ये water body से cross कर रही है and then islands में people are living. So this will be very problematic for those, because एकदम से वो, अब उनको कैसे पता है, because this is an imaginary line. So वो the time zone concept will be very confusing and different for them. So what it has been decided, internationally agreed, to imagine this line to have passed only through the water bodies. So यहाँ पे जो भी islands present हैं, it's better that we just imagine कि okay, we will not disturb those people. Only this imaginary line will pass through the water body. Therefore whatever confusion remains, it is just on the paper, not in the practical life. This is the whole idea of ideal. So I have made myself clear with 3 major points: local time, standard time and ideal. I hope the session would be of some use to you, and I would be trying to bring you more and more videos on the same topic. We would be just continuing with the different topics here. Please do subscribe to the channel. I really need your support to spread the word. If you really feel the content was of worth watching, kindly do check the other videos also, and like, comment, share and subscribe. Thank you so much guys. I'll be seeing you very soon in the next video. Take care till then. Bye bye.